Alright, so today I'm going to talk about a website that has the earning potential to help you make $7,500 a month online as a freelancer. और दिस वेबसाइट इज studypool.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ पे लोग माइक्रो ट्यूटरिंग के लिए आते हैं। दे नीड हेल्प विद वट एवर देर स्टडिंग। अब ये यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, कॉलेजेस में हो सकते हैं, स्कूल्स में हो सकते हैं, वैसे कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो सकते हैं एंड दे नीड हेल्प। और उस केस के अंदर उनकी हेल्प कौन करेगा? आप जैसे लोग जिनको वो चीज़ आती है। एंड यू नो दे वुड बी देयर साइंड अप एज ट्यूटर्स। और जो भी हेल्प चाहिए होगी उस पर्टिकुलर पर्सन को, वो वहां पे आपकी सर्विसेज लेगा एंड यू कैन टीच देम। अब मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भाई हमने बहुत सुना है, ये ऑफन टाइम्स पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही नहीं होती है। तो जस्ट टू पुट दिस आउट देयर, पाकिस्तान में अवेलेबल है। दे आल्सो पे वाया पेयोनियर एज वेल एज वेस्टर्न यूनियन। आई रियली डोंट नो हु यूजेस वेस्टर्न यूनियन एनीमोर, बट खैर they pay via Payoneer, Western Union, also via PayPal. So जहाँ भी हैं आप दुनिया में, not just in Pakistan, if you're in India, Pakistan, you know, wherever around the world, you can be using this website and receiving payments pretty much anywhere. और जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, या इफ यू लाइक यू नो आई नीड सम एविडेंस, सम प्रूफ, तो इनकी वेबसाइट पे एक्चुअली इनके जो टॉप ट्यूटर्स हैं या जो लोग अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका लीडर बोर्ड है। और उस लीडर बोर्ड पे जो पर्सन टॉप पे है, दैट पर्सन हैज मेड अराउंड $500,000। You know, just some quick maths to show you. $500,000 is around, yep, that's around 8 crore 50 lakh Pakistani rupees, which is the cost of around 8.5 Hyundai Sonatas or around one really fancy home. So, you know, the potential is there. Not to say कि आप इतने पैसे बनाओगे, but just to tell you what's possible if you do it really, really well, you know, better than anyone else. अब आप सोच रहे होंगे, यार खलीद क्या यार तूने लेट कर दिया भाई, अब तक तो बहुत से लोग वहां पहुंच गए होंगे सिखाने के लिए, बहुत से लोग वहां पे पहुंच गए होंगे पढ़ाने के लिए। तो जस्ट टू लेट यू नो, इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, आई स्टिल थिंक काफी हद तक स्टडी पूल हमारी कम्युनिटी में डिस्कवर हो रहा है, इवन अराउंड द वर्ल्ड डिस्कवर हो रहा है। You know, chances are that you're probably hearing about Studypool the first time or the first few times. It's not really, you know, as famous as something like Upwork or Fiverr, which means जब भी हम लोग freelancing करने का सोच रहे होते हैं, these are the platforms that we look towards. And not to say that they're bad, they've historically been great marketplaces to work at. लेकिन just to let you know, अगर हम जाएं स्टडी पूल की वेबसाइट पे और स्टडी पूल की वेबसाइट पे जाकर उनके ट्रैफिक एनालिसिस करें, और क्योंकि भाई वेबसाइट्स का काम करता है और वेबसाइट्स बनाता भी है, बनाना सिखाता भी है, और यू नो कंटेंट वेबसाइट्स का काम है, you can head over to the blogging playlist to see how to do that, yeah, how I do that. But anyways, I know how to get an estimate of a website's traffic, or this website gets around 1 million page views every month. That means कि लोग वहां आ रहे हैं, around 1 million students every month are coming to study pool to ask questions, to hire people जो कि उन questions का जवाब उनको समझा सकें, और not enough people still know about it, which basically means demand high है, supply कम है, इसको मीट करने के लिए पैसा मौजूद है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि स्टडी पूल पे अगर लेट्स से you're like खलील टेस्ट समझ आ गई बात की, करना क्या है, सिखा कैसे सकते हैं, पैसे कैसे बनते हैं स्टडी पूल। So there are primarily two ways in which you can make money on study pool. मेथड नंबर वन वो है माइक्रो ट्यूटरिंग का मेथड। तो माइक्रो ट्यूटरिंग का मेथड वही है जो मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करता आया हूँ। लोगों के अपने सवालात होंगे, लोग कोई भी सब्जेक्ट स्टडी वगैरह कर रहे हैं या कुछ चीज़ सीखना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड सवालात होंगे, आपको अगर वो चीज़ आती है आप उनको माइक्रो ट्यूटर करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, और उसके लिए वो आपको पे करेंगे। दैट्स माइक्रो ट्यूटरिंग, काइंड ऑफ लाइक आप समझो कि जो पाकिस्तान के अंदर एक पुराना कॉन्सेप्ट चलता आया है ट्यूशन वाली बाजी का, just that the tuition wali baji can, you know, she's like super rich now and can buy a house. Anyway, so that's method number one. Method number two जो है जिसके थ्रू आप पैसे बना सकते हैं स्टडी पूल, that is उनका नोट बैंक। और नोट बैंक के अंदर क्या होता है, इफ यू हैव एनी क्लास नोट्स, ऑब्वियसली आप लोग अगर कहीं पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज वगैरह में, आप भी सब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ पढ़ते ही होंगे, और वही सब्जेक्ट्स दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर स्टडीइंग देम एंड पीपल नीड हेल्प विद देम, और यू नो अ पर्सन लाइक मी रियली लाइक्स यूजिंग पीपल्स नोट्स instead of making my own.
इवन अगर उन्होंने अपने भी बनाए हों तो अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, क्वेश्चनियर्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, कुछ है दैट दैट यू थिंक के स्टूडेंट्स और इसको यूटिलाइज करना चाहेंगे, उनके लिए यूजफुल होगा, यू कैन अपलोड दोज नोट्स ऑन देयर नोट्स बैंक। उसका भी एक पूरा प्रोसेस है उनका। एंड वंस डन वो अपने बैंक के ऊपर उसको डिस्प्ले कर देंगे एंड पीपल कैन बाय देम। एंड वंस दे बाय तो आपको उसके अंदर एक कमीशन मिलेगा। सो स्टडी पूल अपने पैसे भी रखेगा और उसके अंदर एक हिस्सा आपको भी देगा। एंड इट्स प्रीटी मच पैसिव इनकम। जितना मतलब दिस इज एज गुड एज इट गेट्स कि आपने एक दफा एक चीज लगा दी वहां पे, एंड के साथ साथ they keep paying you. And these can be like handwritten notes, typed notes, or anything honestly. With that aside, अब जाते हैं उनकी वेबसाइट पे और चेक करते हैं कि क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि सिखाई जा सकती हैं। कुछ हमें आइडिया मिले कि अगर हमारे पास कोई स्किल है, हमारे पास किसी चीज़ का कोई नॉलेज है, हाउ कैन वी टीच दैट ऑन देयर वेबसाइट। ओके, सो ये मैं इनके होम पेज पे आ चुका हूँ और अगर आप इनका होम पेज चेक करें तो यहाँ पे टॉप बार के अंदर यू कैन सी ऑल सब्जेक्ट्स का एक टैब है। सो ऑल सब्जेक्ट से हमें एक आइडिया होगा कि लोग किस किस कैटेगरी के अंदर सवालात कर रहे हैं, सो दैट वी कैन cater our services accordingly. So ऑल सब्जेक्ट्स के अगर ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँ, वी कैन सी बिजनेस है, ह्यूमैनिटीज है, मैथमेटिक्स है, प्रोग्रामिंग है, साइंस और राइटिंग भी है, विच इज़ फॉर पीपल who are into writing like me, ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। सो जस्ट टू डैबल इनटू इट, अगर हम इस पे क्लिक करें, सो वाओ, सो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। एंड इवन ब्लॉग पोस्ट भी है यहाँ पे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज दैट यू कुड वर्क इन। और अगर हम यहाँ पे ऊपर बाकी देखें इनका जो टॉप बार है उसके अंदर दीज आर प्रॉब्ली दी कैटेगरीज जहाँ पे दे गेट द मोस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड, व्हिच इज व्हाई उन्होंने यहाँ पे इनको टॉप पे फीचर किया। सो बिजनेस, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंस एंड राइटिंग seems pretty promising honestly. अगर हम थोड़ा और नीचे आए, if we just check their website out, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं they have been featured in websites like Entrepreneur, Forbes, TechCrunch, Inc, HuffPost वगैरह. These are names that pretty much anyone on the internet knows कि ये these are really big deals. आप ऐਵੇਂ randomly you don't just get mentioned in them. So that's pretty promising. और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है हाउ Q&A ट्यूटरिंग वर्क्स। लोग आके यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक ट्यूटर के साथ और एक्सप्लेनेशन मिलेगी उनको और आंसर मिलेगा। सो दैट्स प्रीटी ऑसम। और अगर हम नीचे आते जाएं, सो यहाँ पे उनके फीचर डॉक्यूमेंट्स भी हैं। सो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, अच्छा, सो दीज वर द डॉक्यूमेंट्स। अब लेट्स से वी वांट टू become a tutor. So to become a tutor का यहाँ पे बटन है, if we click on that button it opens this page. और यहाँ पे you can see earning potential, as I mentioned, is around 7,500 USD monthly, and they're accepting tutors from all over the world, which is great news. So थोड़ा सा और हम नीचे आए तो they talk about lowest service fees. So study pool पे you get around उनका pricing model varied है for different levels, but it starts at around 20%, which is pretty competitive. अगर आप वेबसाइट्स देखो जैसे कि अपवर्क है, सो उनका भी इसी परसेंटेज पे स्टार्ट होता है। एंड एज आई सेड, इट्स रिलायबल इनकम, मीन्स के एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा नहीं, बल्कि ये रेगुलरली स्टूडेंट्स आपके पास आते रहते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं। एज आई मेंशनड, दे हैव thousands and hundreds of thousands of people coming in, and full freedom and flexibility है आपके पास, which is awesome. यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट earners का भी बोर्ड है, and as I mentioned already, over $500,000 have been made by this top earner. So pretty cool. और इसके नीचे भी देखें, so people are tailing him, and it's awesome to see एक प्लेटफॉर्म किस तरह अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को। एंड रीसेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके पास कुछ हैं जो कि आप देख सकते हो। सो देयर इज मैप रिसर्च क्वेश्चन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन, और ये तो मैं भी पढ़ के आया हूँ। So that's actually pretty awesome. अच्छा, so if we click on apply now, so it will ask you to become a tutor. Sign up करने के लिए आपको कहेगा through email, username, password, or you could also try signing up with Google, Facebook, LinkedIn, which is much easier, and that's what I'll do. Once I do, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अगला पेज खोल देगा। यहाँ पे terms of service है कुछ, ये I'm scrolling it for the purpose of this video, but पढ़ लेना। उसके आगे ट्यूटर एप्लीकेशन है, सो यहाँ पे ट्यूटर एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन नाउ, लेट्स क्लिक ऑन दैट।
और ये मेंशन करता है कि दिस विल टेक अराउंड 30 minutes, सो डोंट डू दिस इन अ हरी. माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप मेक श्योर यू हैव सम टाइम एट हैंड. 30 minutes ये कह रहे हैं, so probably you should have at least an hour of time before you start this application. So और ये मेंशन ये भी करते हैं कि if you're unable to complete it in one sitting तो वो उसको सेव कर लेंगे. So that is reassuring as well. So start application पे click किया. Once I click on start application तो ये पेज ओपन हो गया जहाँ पे they'll ask me my name, last name, nationality, जहाँ पे आप अगर P पे क्लिक करें so पाकिस्तान है, और India वगैरह, so they have all these countries. Where do you live, address, city वगैरह आपने बताना है, pretty easy. Academic background वगैरह आपने mention करना है, field of study mention करनी है. Let me just fill this up और अगले step पे चलते हैं. Okay, so आगे आप चलें तो it will ask you about your biography. Tell us a little about the subjects you are knowledgeable about through prior experience वगैरह वगैरह. So आपने अपने बारे में कुछ बताना है. अपना preferred rate आपने mention करना है per hour. I would recommend something like अगर आप start कर रहे हैं, start with something like $10. Pump it up over time. So जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, it will keep asking you questions about yourself और फिर आहिस्ता आहिस्ता it will ask other questions related to your skills वगैरह सब, ताकि वो एक अच्छा आइडिया लगा सकें. And once you do submit this application to tutor, तो उसके बाद they take a few working days to get back to you और फिर आपको email आ जाएगा जिसमें वो बताएंगे whether you have been accepted into this or not. Alright, so as you can see, Studypool looks like a pretty good option अगर आप एक ऑनलाइन इनकम बनाना चाहते हैं as a side hustle. So if you're interested, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा to sign up for Studypool. You can use that and I'll see you in the next one.